नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। यहाँ पे क्या करना है, इन केस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, नाउ वी विल डिस्कस हाउ एनी gaseous material can be converted into liquid one, है ना। Here pressure versus volume graph is also we consider plotted. Pressure versus volume graph is also we consider plotted. तो देखिए काफी बड़ा टॉपिक है, तो वन बाय वन आपको बताते जाऊंगा। क्लियर? नाउ for complete data on pressure, volume, temperature relation of a substance in both gaseous and liquid state was obtained by Thomas Andrew for CO2. Clear? The complete data on pressure, volume, temperature relation of a substance in gaseous and liquid was obtained by Thomas Andrew on CO2. He plotted isotherm of CO2 at various temperature as shown in figure. The first temperature is 13.1, second one is 21.5 and third one is 30.98 degree Celsius. He plotted isotherm of CO2 at various temperature. Later on it was found that real gases behave in same manner as CO2. Clear? So Andrew noticed that at high temperature isotherm look like that as ideal gas, and gas cannot be liquefied. Gas cannot be liquefied even at very high pressure. Clear? As the temperature is lowered, suppose temperature low करो, the shape of curve changes and data shows considerable deviation from ideal behavior. देखो पॉइंट ई पे कैसा है, BC पे कैसा है और इधर पे देखो कैसा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हेनेवर वी आर ऑब्जर्विंग हियर दिस ग्राफ, है ना, तो 13.1 पे देखो अलग डेटा है ना, 21.5 पे अलग है एंड 30.98 पे अलग है। क्लियर? तो नाउ एट 30.98 डिग्री सेल्सियस CO2 CO2 remains gas up to 73 atmospheric pressure, which is representing point. Here we can see that E. Clear हुआ कि नहीं? Here we can see that E और pressure कितना है, तो 73 will be there. At 30.98 degree Celsius CO2 remain gas up to 73 atmospheric pressure. At 73 atmospheric pressure liquid CO2 appears for the first time. मतलब इस पे पहली बार लिक्विड दिखेगा। The 30.98 degree Celsius is known as critical temperature of CO2. So this is the highest temperature at which liquid CO2 is observed. So what is critical temperature? The temperature below which liquefaction of any gaseous material is possible. Temperature below which liquefaction of any gaseous material is possible, it is normally known as critical temperature. Or in another way we can say that temperature above which liquefaction of gaseous material is not possible. Clear हुआ? So now above this temperature it is gas. Volume of 1 mole of the gas at critical temperature is known as critical volume as well as critical pressure. Clear हुआ कि नहीं? Above this temperature it is gas. Volume of 1 mole of gas at the critical temperature is known as critical volume, and as well as we can say that critical pressure is there. Clear? The critical temperature, pressure and volume are known as critical constant. कोई पूछे what is critical constant? So critical temperature, critical pressure, critical volume are known as critical constant. Critical temperature is represented with the help of Tc, critical volume Vc, and then after Pc will be there. Clear? Further increase in pressure simply compresses the liquid CO2 and curve represent the compressibility of the liquid. The steep line represent the isotherm of the liquid. ये जो steep line है ना, ये देखिए इधर से इधर से इधर से, तो steep line represent isotherm of the liquid. Even a slight compression, आप थोड़ा सा भी change करो, even a slight compression result in steep line in pressure, indicating very low compressibility of the liquid. Below 30.98 degree Celsius, the behavior of the gas
on compression is quite different. Clear? At 21.5 degrees Celsius, CO2 remains as a gas only up to point B. क्लियर हुआ? सपोज यदि हम लोग कोई ब्लैंक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर मैंने मटेरियल भरा, तो देख यहाँ से लेके गैस है, उसके बाद whenever temperature will be 13.1 degree Celsius, तो whatever gas is collected, it is converted into liquid, and if once it is converted into liquid, a green area, उसके बाद if we are increasing this pressure, but further liquefaction is not possible. चलो उसके बाद फिर से हम लोग A to B गैस है, फिर B से लेके C तक लिक्विड, C से D, फिर से फर्दर लिक्विफिकेशन इज नॉट पॉसिबल. तो यही आपका लिक्विफिकेशन का कंसेप्ट है. क्लियर? फॉर वी कैन से इट CO2. समझ में आया कि नहीं? दिस इज चैप्टर नंबर 5. तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट विल हैपन एट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21.5 and then after 31.1 degree Celsius. Clear? Here critical temperature is 30.98. तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? Now see, at point B, now observe in this condition, at point B, this one, this is point B. At point B, liquid of particular volume appears. यहाँ पे B पे क्या है? A से B तक गैस होता है, and B से here whatever gas is collected from A to B, it is now liquefaction will start. So further compression does not change the pressure. Due to compression, air pressure will not changes. Liquid and CO2 coexist, and further application of pressure result in the condensation. Clear? Of more gas until the point C is reached. मतलब देखो A से लेके B तक क्या होता है? गैस होता है. If you are going A to B, तो gas will be there. And whenever point B will come, here liquefaction will start and temperature will become 21.5 degree Celsius. So from B to C, whatever gas is collected between A to B, it will be again is liquefied. Clear हुआ कि नहीं? Here A to B gas will be there, and whenever temperature will increases up to 21.5, then B to C, whatever gas is collected from A to B, it will be completely liquefied, and here this pressure will be P2. So whenever pressure will be P2, then we are increasing pressure, and if we are increasing pressure, then we are observing that from point C to D, here further liquefaction is not possible. A to B gas is collected, and whenever A to B gas is collected, here what will happen? So collision will take place. So due to collision, temperature will increases, and whenever temperature will reach up to 21.5 degree Celsius, then from B to C, complete gaseous material is converted into liquid, and at this temperature, pressure will be P2, represented with the help of P2. Now after 21.5, if we are increasing pressure, मतलब from C to D, here we can say that what will happen? Temperature means pressure will increases, but liquefaction will not increase here. Clear? तो उसी को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं. Now at point C, all the gases has been condensed, and further application of pressure merely compresses the liquid as shown by steep line, जिसको मैंने C to D बोला. Clear? A slight compression from volume V2 to V3. यहाँ देखो slight compression मतलब V2 से V3. V3 क्या है? ये D वाला पॉइंट. V2 क्या है? ये C वाला पॉइंट. Clear? Result in steep rise in pressure from P2 to P3. फिगर में दिया है देखो. यहाँ पे pressure will increases. P2 से लेके P3 pressure will increases, but liquefaction will not increase. मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ. From point A to B, gaseous material is collected. So whenever A to B gaseous material will collected, then here collision will take place. So after collision, pressure will increases, and due to increase in pressure, temperature will increases, and in this way, 13.1 degree Celsius is now converted into 21.5. So whenever point B will come, then whatever gas is collected from A to B, here liquefaction will start. तो B से लेके C तक लिक्विड हो जाएगा, और फिर से C से लेके D तक आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, बट फर्दर लिक्विफिकेशन विल नॉट इंक्रीज. क्लियर?
So this is complete information from C, A to B, B to C, and then after C to D. And C, at C point volume is V2 and at D point volume is V3. At C point pressure is P2 and at C at V3 here pressure is again means P3 is there. Clear? So now अब ये तो हो गया 21.5. अब आता है below 30.98 डिग्री सेल्सियस. ये मतलब पॉइंट E. तो below 30.98 degree Celsius critical temperature, each curve show the similar trend, है ना? Below this, clear? Now only length of the horizontal line increases at lower temperature. ऐसा बोला. देखो BC का एरिया क्या है, कम है, और ये वाला एरिया क्या है 13.1 वाला ज्यादा है. मतलब यदि मैं 30.98 से नीचे देखूं तो इधर BC से भी लिक्विफिकेशन होता है, इधर भी लिक्विफिकेशन होता है ना? मतलब प्रोसेस विल रिमेन सेम बट हियर वी कैन से दैट हॉरिजॉन्टल एरिया विल इंक्रीजेस. BC का एरिया कम है और देखो 13.1 का ज्यादा है. क्लियर? दैट क्रिटिकल पॉइंट C, at critical point horizontal portion of the isotherm here merges into one point. Clear? ये देखो isotherm मतलब ये वाला E. Now, thus we see that a point like A, here we can say that point like A in the figure represent gaseous state. The point like D, देखो ये A है और ये क्या है D है, represent liquid state. ये A है ना, और ये क्या है D है. ग्राफ को आपको ऑब्जर्व करने का. Represent liquid state and at point under the dome, dome मतलब ये ब्लैक वाला एरिया, under the dome, डॉम मतलब ये ब्लैक एरिया. क्लियर? जो मैंने बनाया है. नाउ रिप्रेजेंट सी अ पॉइंट अंडर डॉम शेप एरिया रिप्रेजेंट एक्सिस्टेंस ऑफ लिक्विड एंड गैसियस CO2 इन इक्विलिब्रियम. क्लियर? तो जो डॉम वाला एरिया मतलब पूरा ब्लैक वाला वो क्या होगा, तो दिस विल एक्सप्लेन लिक्विड स्टेट ऑफ CO2. क्लियर हुआ? नाउ अब ये तो क्या हो गया, तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ CO2. नाउ ऑल द गैसेस, अब दूसरी गैसों की बात हो रही है. All the gases upon compression at constant temperature, जिसको बोलते हैं isothermal compression. तो all the gases upon compression at constant temperature, isothermal compression, shows the same behavior as shown by carbon dioxide. जैसे अभी चलो CO2 को हटा के कोई दूसरा गैस लेना है तो उसका भी कैरेक्टर ऐसे ही होगा. Also about discussion मतलब ऊपर shows that gases should be cooled below their critical temperature. Clear हुआ? Gases should be again cooled below their critical temperature for liquefaction, है ना? तो TC of gas is highest temperature at which liquefaction of gas first occur. तब मैं यहाँ बोल what is TC? तो TC is critical temperature. जैसे CO2 का critical temperature है ऐसे हर गैस का critical temperature होगा. तो TC of gas is highest temperature at which liquefaction of gas first occur. तो liquefaction of so-called permanent gases, that is gases which show continuous positive radiation in Z value. Clear हुआ? And it is required cooling as well as considerable compression. मतलब आपको CO2 का हटा के कोई दूसरा गैस रखना है तो यहाँ पे compression is required, cooling is required. Then after we can say that here gaseous material can be converted into liquid one. Clear? Now, in case of liquefaction of gas, है ना, तो 2 to 3 portions are completed. Now we will discuss here this graph. तो यहाँ पे क्या करना है? See, आपको एक चीज पक्का है. देखो, if your material is gaseous in nature, if your material is gaseous in condition, तो normally what will happen? Here, if we are applying any pressure, तो pressure को हम लोग compression बोलते हैं. So whenever we are applying any pressure, in another way it is normally known as compression. So normally what will happen? Here liquefaction will start. Clear? चलो. Now it is possible. देखो, it is possible to change a gas into liquid or liquid into gas by a process in which always a single phase is present. यहाँ पे क्या आएगा? Only single phase is present. For example, in figure we can move from point A to F. तो चलो A क्या है? ये है. F क्या है? ये है. Clear? A to F vertically by increasing the temperature.
यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? देन वी कैन रीच द पॉइंट G, जैसे आप AF, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हियर वी कैन से दैट पॉइंट G विल बी देयर। क्लियर हुआ? नाउ बाय कंप्रेसिंग द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर along this isotherm, तो आइसोथर्म एट 31.1 डिग्री सेल्सियस, देखो ये दिया हुआ G का, मतलब आप A से A पे क्या है 21.5 है, F पे क्या है 30.9 है और G पे क्या है 31.1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? Now pressure will also increases in this situation whenever we are going A to F and F to G, here pressure will also increases. So now we can move vertically, अब क्या vertically down towards D। अब हम लोग क्या करेंगे? Now we are vertically, है ना, हम लोग डाउन में आएंगे, तो ये D by lowering the temperature as soon as we cross the point H, यहाँ पे क्या आएगा H on the critical isotherm, so we get liquid, so we end up with liquid, but in this series of changes we do not pass through two phases region। तो two phases region मतलब liquid and gas or gas or liquid। If process is carried out at critical temperature, substance always remain in one phase। यदि यहाँ पे critical temperature होगा तो whatever substance is present, it is always present in one phase, है ना? Now so thus there is a continuity between gaseous and liquid state, there is continuity between gaseous and liquid state। The term fluid is, see, the term fluid is used for either a liquid or a gas to recognize this continuity। अब क्या करेंगे, हम लोग liquid नहीं उसको fluid word ले लेते हैं। तो thus a liquid can be viewed as a very dense gas, है ना? तो liquid and gas can be distinguished only when the fluid is below its TC, मतलब critical temperature and critical pressure, and volume lie under the dome, इसको बोलते हैं dome। ये ब्लैक वाले के अंदर जो आता है that is normally known as, here we can say that dome। तो since in that situation liquid and gas are in equilibrium, है ना? Clear? And the surface separating the two phases is visible, यहाँ पे जो होगा it is visible। In the absence of this surface, there is no fundamental way of distinguishing between two states। Two states मतलब liquid and gas। At critical temperature, liquid passes into gaseous state imperceptibly and continuously the surface separating two phases disappear। देख जैसे liquid से gas में गया है ना, गैस से लिक्विड में गया, तब दो फेज नहीं होगा, ओनली वन फेज विल बी विजिबल हियर। अ गैस बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड कोल्ड वेपर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम लोग नया वर्ड क्या लेंगे, वेपर ऑफ द सब्सटेंस। तो CO2 गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज CO2 वेपर। CO2 गैस है, बिलो इट्स क्रिटिकल वी कैन से द टेम्परेचर, इट इज नॉर्मली नोन एज CO2 वेपर। तो सिमिलरली अभी सपोज मैंने कोई दूसरा गैस लिया है ना NO2, तो उसको NO2 वेपर बोलते हैं। एंड इन योर टेक्स्ट बुक हियर वन टेबल इज गिवन। इन दिस टेबल हियर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस विल बी गिवन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आपको, अब मैं ना सिंपल, ये तो चलो टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट था। Now liquefaction of gas can be explained with the help of one simple figure। मैं आपको बताता हूँ, फिगर में थोड़ा ध्यान देना। जैसे अभी सिलेंडर है ना, तो what is importance of critical temperature, pressure and all that, so how we can prepare, है ना, how we can say that, तो how we can means fill different type of container। तो जैसे अभी हम बोलूँ कि LPG सिलेंडर है, फिर हुआ कि नहीं? अभी मैं क्या लूँगा, जैसे चलो ये LPG सिलेंडर है C, तो दिस इज LPG सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस फर्स्ट सिचुएशन योर सिलेंडर इज ब्लैंक वन। क्लियर? यहाँ पे नोजल होता है, तो हियर वी आर यूजिंग, वी कैन से दैट नोजल। तो विद द हेल्प ऑफ नोजल, पहले कोई भी गैस नहीं है, तो नाउ वी आर फिलिंग इन दिस गैस। तो चलो जैसे मैंने गैस पार्टिकल लिया, क्लियर हुआ? तो जैसे ही आप गैस पार्टिकल लेते हो एंड टेम्परेचर विल बिकम 13.1 डिग्री सेल्सियस, देन कोलिजन बिटवीन gaseous molecule will start
and whenever collision will increases तो pressure will increase, pressure will increases तो temperature will increase, and suppose if pressure will increases then according to Boyle's law volume will decreases, और वैसे भी देखिए यहाँ पे n and t is constant, तो whatever gas is collected here its liquefaction will start, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा, गैस होगा, है ना। और जैसे ही आपका देखो यहाँ पे सी टेम्परेचर विल इंक्रीजेस, यहाँ पे देखो इधर टेम्परेचर विल बिकम 13.1, इधर से लेके यहाँ तक गैस होता है, लिक्विड होता है, व्हाट एवर गैस इज कलेक्टेड फ्रॉम हियर टू हियर, है ना, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। इट मींस व्हेनेवर मैक्सिमम कलेक्टेड गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड तो प्रेशर विल बी P1। अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ाओ बट हियर मींस फर्दर लिक्विफिकेशन विल नॉट स्टार्ट, मतलब जितना गैस ब्लू कंडीशन में आया था सब लिक्विड हो गया। अब चलो अब हम लोग है ना फिर से गैस यहाँ पे फिलअप करते हैं। देख मैंने कलर बताया है, कलर अलग अलग कलर, तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर विल बिकम 21.5, मतलब देखो A to B क्या होगा, गैस होगा, फिर व्हाट एवर गैस विल बी कलेक्टेड फ्रॉम A to B इट्स लिक्विफिकेशन विल स्टार्ट, तो B से लेके C पे क्या होता है, हियर लिक्विड विल बी देयर एंड प्रेशर विल बी P2। उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, मतलब C to D पे प्रेशर विल इंक्रीजेस बट लिक्विफिकेशन ऑफ मटेरियल विल नॉट इंक्रीज हियर। तो यहाँ पे चलो फिर से पूरा आ गया। उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, नाउ अगेन वी आर एडिंग हियर विद गैसियस मटेरियल। जैसे 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 आप गैस भरते जाते हो तो यहाँ पे 30.98 डिग्री सेल्सियस विल बी देयर, क्लियर हुआ। अब क्या करना है, देख 30.98 पे मैक्सिमम सिलेंडर विल बी अगेन वी कंसीडर फिल्ड हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो बोलते हैं ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल इन ब्लू कंडीशन विल बी फास्ट, ग्रीन में मीडियम, और रेड वाले में क्या हो जाएगा, मिनिमम विल बी देयर। और जैसे ही आपका यहाँ पे देखो ये सिलेंडर फिल हो गया है, क्लियर, तो क्या होगा, आफ्टर वी कैन से दैट अटेनिंग 30.98, नाउ हियर ऊपर तो क्या है, गैस है, और नीचे क्या है, लिक्विड है। तो आपको एक वर्ड बीच में यूज किया था हियर, है ना, गैस टू लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो दिस साइन विल रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, मतलब whenever we consider 75 to 80% this cylinder is filled, so normally what will happen, here liquefaction will stop, और जैसे ही आपका लिक्विफिकेशन स्टॉप हो जाता है तो नॉर्मली इसका मतलब सिलेंडर भर गया है, सिलेंडर आगे हो जाएगा एंड न्यू सिलेंडर विल कम। So this is C. Here we can say that figure with the help of which we can explain here liquefaction of gas. Clear?